Sit down and write your speech right now. जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट टॉपिक हो गया है वो सेकंड टॉपिक पे लिखेंगे, जो नहीं प्रेजेंट करेगा उसका अटेंडेंस चला जाएगा। सीधी सी बात, आप लोग यहाँ अटेंडेंस के लिए ही बैठते हो, मूर्ति की तरह बैठ के बन जाते हो, यहाँ पर चेयर की तरह पड़ जाते हो यहाँ पर। Write this down right now and you will present here. स्पीच नहीं करोगे तो एक्सटेम्पोर करना होगा। What I'm giving you right now, 5 minutes and present. Yes, you only get 5 minutes. 2 महीने बाद 5 minutes चाहिए तुमको। और मोबाइल किसी ने खोला ना, अगर टिक गया किसी का मेरे पास मोबाइल, 5 दिन तक वापस नहीं करूंगी मैं। मम्मी पापा से मैं बात करूंगी फिर तुम्हारे। क्लास का टाइम वेस्ट करने का सोचना भी नहीं। मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अटेंडेंस तो जाएगा ही, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। Write down the speech and try to be ready as much as you want. Yes. Max जितना आप बोल सकते हैं उतना लिखो। You have the time limit, you have the presentation limit. 3 अभी बज रहे हैं, 3:10 हो रहा है। 3:10 से 4 बजे तक जितने लोग प्रेजेंट कर सकते हो, काउंट डाउन कर लो आपके पास अपना इंडिविजुअल कितना टाइम है। आपका हो गया बच्चे? जैसे प्रेजेंट करना है करो। You have to come there and speak. नहीं, yes. वो आ गई वापस। 5 मिनट में वापस आ गई। 5 मिनट से 1 मिनट लेट हुआ, you are not allowed to enter. Do not think too much. जितना सोचोगे उतना टाइम वेस्ट करोगे। Start writing. This afternoon now. आपने लिख रखा है? देखिए
1 minute. 1 minute. Yes, hold this. Hold this. Okay. Good afternoon, everyone. Yes, and I want all of you to be silent because we will be giving reviews to each and every one of you. Good afternoon, everyone. I am Parvinder. Today's topic for speech is television violence and children. I would like to thank Akanksha ma'am for giving me such a golden opportunity to present my views in front of everyone. Violence is an everyday object in our society. It affects adults as well as children, but it has a greater impact on children. Children are more vulnerable and are getting influenced by things they see and hear. More and more violence is becoming present in daily life. Children all over the world want to go outside again. Children all over the world are becoming victims of the same violent acts they witness on TV and at home. With the start of 21st century, violence is fueled by money, racism, drugs, and media. The easiest way to change and regulate is media violence. You cannot turn off the news without hearing about a murder or a death. In conclusion, parents have to speak to their children about different shows that are used by their children to avoid misinterruption, violence, and aggressive behavior. That would lead them to become criminals. Thank you and have a nice day. All right. Yes. What are your views on her speech? आपके views क्या हैं इसके speech में? Can you give constructive feedback to her? Do you want them to give their review? Sure. Okay. Actually, she was not that very fast. She could have carried it on if emotions were attached. ठीक है, if you have presented it in a flow, like आपकी आवाज में अगर थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता तो ये स्पीड ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन होना जरूरी है. अदरवाइज इट विल बी लाइक रीडिंग योरसेल्फ. आप खुद को रीड करके सुना रहे हो वैसा लगेगा. सेकेंड थिंग, आपका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. Like non-verbal communication is like I'm listening to a statue. वो नहीं होना चाहिए. So next time I want you to work on your non-verbal communication as well as your voice variation. All right? Sit down. Sure. Good morning to everyone present here.
Afternoon, afternoon. Good afternoon to everyone present here, respected teachers and all my dear friends. My name is Akanksha from BBA Course, standing in front of you. Focus my views on the topic television, violence and children. Violence is an everyday accident in our society. It affects adults and children, but it has a greater impact on children. Children are more vulnerable and greatly influenced by things they see and hear. More and more violence is becoming prevalent in daily life. Children all over the world are becoming victims to the same violent acts they witness on TV and at home. With the come of 21st century violence is fueled by money, racism, drugs, and media. The easiest to change and regulate is media violence. You cannot turn on the news hearing about a murder, rape, or death. Thank you. Yes. Do you want them to give their feedback? All right, that's up to you. So first of all, 90. Okay. First of all, आपको यहाँ, it's all right. First of all, आपको यहाँ पर वॉइस वेरिएशन आपका अच्छा है, स्पीड ठीक है, कंटेंट ठीक है, बट कंटेंट बोथ ऑफ यू, आपने अपना ओपिनियन नहीं लिखा है. You have written down more of data rather than your own opinion. ठीक है, तो आपको अपना ओपिनियन थोड़ा सा इंक्लूड करना है दोनों को. सेकेंड ऑफ ऑल, ट्राई टू वर्क ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशन. ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन एंड योर, अभी देखो ये चीज जो है, द थिंग्स दैट यू आर फीलिंग, आपके एग्जैक्ट फीलिंग क्या है यहाँ पर खड़े होने से, टेल मी दैट. नो बस यस नहीं, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन योर बॉडी. यस, योर इनसाइड्स, आपका जो शेक हो रहा है, अर्थक्वेक जो आपके अंदर ही अंदर आ रहा है, वो अर्थक्वेक जो है, व्हेन यू गेट यूज्ड टू इन दिस एरिया. ठीक है, बिकॉज द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बोल रही हूँ. ठीक है, आई एम माई सेल्फ एन इंट्रोवर्ट. ठीक है, आप इंट्रोवर्ट का मतलब समझते हैं, द पर्सन हु इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू एनीवन, लिटरली नो वन. ठीक है, एंड दैट पर्सन इज टीचिंग यू स्टैंडिंग हियर. ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि हाउ मच आई हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम. ठीक है, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई एक्चुअली हैव फेंटेड इन द स्टेज. ठीक है, एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैव एक्चुअली डिलीवर्ड द बेस्ट स्पीच फ्रॉम द स्कूल. तो वो वेरिएशन जो आया है वो मैं आपने लाना चाहती हूँ, एंड वो वहां बैठ के कभी नहीं आएगा. इफ यू थिंक दैट आपका कंफर्ट जोन जो है ना, उससे जब तक बाहर नहीं निकलोगे, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न दैट. एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. इवन राइट नाउ व्हेन आई एम टेकिंग न्यू क्लासेस, जब फर्स्ट डे किसी की भी क्लास में जाती हूँ, आज भी माय हैंड्स आर ऑलवेज शेकिंग. कभी दिखता है तुमको? कल नोटिस किया? लास्ट क्लास नहीं किया ना? व्हाई नॉट? बिकॉज आई नो व्हाट आई एक्सपीरियंस. मैंने अपने बॉडी के जो शेक्स हैं उसके ऊपर फेमिलियरिज्म हो गया मेरे को. मुझे पता है कि ये सिम्टम्स मुझे देखने के मिलेंगे, लेकिन ये सिम्टम्स मेरी ऑडियंस को नहीं दिखती चाहिए. अंडरस्टूड? सो व्हेन यू नो द थिंग्स. ठीक है, जैसे बताया ना आपको, ह्यूमंस को सबसे ज्यादा डर सिर्फ एक ही चीज से लगता है, अदर देन डेथ. मरने से तो सबको डर लगता है. एक चीज है जो सब इंसान डरते हैं, दैट इज फियर ऑफ अननोन. जो नहीं जानते हो उससे डर लगेगा. जब इससे दोस्ती हो जाएगी, स्टेज से दोस्ती हो जाएगी, तो तुमको डर नहीं लगेगा. या फिर आप अगर डरोगे भी तो अंदर ही अंदर डरोगे. जैसे वो दोस्त होते हैं ना जिनको आपको लगता है, शक है अभी भी कि ये मेरे अगेंस्ट कुछ कर सकता है, तो वो वाला दोस्ती हो जाएगा कम से कम. तो कम यू विल बी कंफर्टेबल एंड योर ऑडियंस वोंट बी एबल टू नो. ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करेंगे. अंडरस्टूड? सो वर्क ऑन योर फेशियल एक्सप्रेशन. सिट डाउन. अंशु नो, अंशु. यस बच्चे. कंटेंट, वॉइस वेरिएशन. यस, 1 मिनट. हाँ, वहां खड़े हो गए तो इसको लेके जाओ. Good afternoon, everyone. My name is Ars, or today's big topic is television violence and children. Television violence is a very serious topic. In television, we see very abusive and illegal things are shown. That is very bad for children. Because of this, it affects
because of this affects so much on children's mind, because children are not so mature to differentiate between good and bad things. In this situation, children are so much watching television and getting inspired by superheroes, and they think if they are superheroes, they are superheroes. They will also fight with villains, but they don't think. These things are affecting children's mind. But and getting aggressive, and this aggressiveness is very bad for mental health. In my opinion, to reduce television violence, first limit the use of television to no more than 1 and 2 quality hours per day. Keep television out of your children's bedroom, and turn off the television during mealtime. Thank you. Now, Harsh. Yes. Do you want the feedback from their side? Their side. Sure. You can give your constructive feedback. हाँ, ठीक है, ठीक है. Yes. Rohit, which topic do you want to give presentation or your speech? वही टेलीविजन वायलेंस पे. Okay. So you have to go ahead and switch on your camera so that you can let me give feedback to her. Harsh, okay? Yes. First of all, what is your feeling when you come up here? Yes, no talking. What exactly are you feeling? Explain नहीं कर सकते, ठीक है. First of all, आपका यहाँ पर जो माइंड है उसमें सबसे पहला थॉट क्या आया जब आप वहां पर गए? Try to distinguish. Symptoms distinguish करोगे तभी तो बीमारी का इलाज करोगे. Yes. What was your first thought? Yes. First fear is that if you forget something or if you stop, you won't be able to start again. ठीक है? ये डर सबसे पहला होता है, हर किसी को होता है कि अगर बीच में कहीं गलती कर दी तो दोबारा नहीं स्टार्ट कर पाओगे या फिर पूरा शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा. राइट? तब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा अबाउट योर सब टॉपिक्स. सब टॉपिक्स क्या कर सकते हैं? आप किसी भी टॉपिक के अंदर क्या क्या लिखते हैं, ये अगर सब टॉपिक्स आपने डिवाइड कर लिया, सब टॉपिक्स मतलब इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हो, ऐसी क्या चीज है जो आप डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कि ये तो मेन टॉपिक तो आपका हो गया, इसके अंदर सब टॉपिक क्या आ सकता है, ऐसा कौन सा टॉपिक आप डिस्कस कर सकते हो जो डिवाइड कर दो 3-4 पार्टीशन में. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीविजन वायलेंस होता क्या है? दैट मींस योर डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन. राइट? डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन. Online student, don't worry, I will send you the image of this. और क्या चीज कर सकते हो, क्या बता सकते हो इसके बारे में? एडवांटेज, डिसएडवांटेज. उससे पहले आप ये बताओगे कि ये कंटेंट कहाँ दिखा है. राइट? इस जगह आपका टेलीविजन में क्या क्या चीज है. ठीक है? फॉर एग्जांपल योर मूवी, स्पेसिफिक कार्टून्स. ठीक है? तो आप कंटेंट बताएंगे एक तरह से, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है. जैसे ये माय आइडियल वाला सा टॉपिक है. माय आइडियल में आप यहाँ पर डेफिनेशन बता दो. मान लीजिए इलोन मस्क का आपका आइडियल है. ठीक है? आप इसको बताओगे, इंट्रोड्यूस करोगे उसको, वो कौन है. ठीक है? कंटेंट में क्या बताएंगे? अबाउट. राइट? उसके बारे में बताएंगे कि आखिर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो आपका आइडियल बना. राइट? तो ये कंटेंट आपको बताना है कि वो चीज आखिर क्यों यहाँ पर डिस्कशन के लायक है. ठीक है? सेकंड, यहाँ पर तब आता है डिसएडवांटेज और एडवांटेज. ठीक है? यहाँ पर तब आता है डिसएडवांटेज और एडवांटेज. इसका मतलब क्या हुआ? माय आइडियल में डिसएडवांटेज एडवांटेज क्या लिख सकते हैं? क्या लिखोगे?
बेसिकली यू विल बी रिलेटिंग थिंग्स इन रियल लाइफ। ठीक है, रियल लाइफ से आप रिलेट कर रहे हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या बता रहे हो, रियल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है वही बता रहे हो ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया कि रियलिस्टिक में आप रिलेट कर रहे हैं, अपने आइडियल्स को खुद से रिलेट करेंगे या फिर कॉमन पीपल से रिलेट करेंगे। एक आइडियल जब एक पर्सन बनता है इसका मतलब उसने कुछ लाइफ में अचीव किया, तो उसको लोग कॉमन पर्सन में नहीं गिनते। ठीक है, इन्होंने बस को आप कॉमन पर्सन कहोगे, नहीं कहोगे ना। एपीजे अब्दुल कलाम जी को कभी बोलोगे कॉमन पर्सन, नहीं बोल सकते। तो इनको हमें रिलेट करना है, पहले कॉमन लेवल पे लेके आना है, तो हम उसे समझ सकें इंसान को। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या होगा, लास्ट इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखोगे कि क्या हमें करना है, डिमेंशन वगैरह क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे, व्हाट डिड यू लर्न, आप उसे कैसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज करोगे। अगर आज लर्नर्स आपके आइडियल है तो आप भी तो पहुंचना चाहते हो वहां पर, तो कैसे करोगे, यू विल एक्सप्लेन इन वन पैराग्राफ। अंडरस्टूड। अगर ये मैप आउट आपके दिमाग में है तो आप कभी भी अपना कॉन्सेप्ट नहीं भूलेंगे, बिकॉज यू हैव दिस मैप प्लान। अब इसमें अगर आपने खुद से लिखा है, मान लीजिए कोई भी टॉपिक के बारे में आपका बेसिक नॉलेज खुद से है, उसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि पहले मुझे डेफिनेशन बतानी है, तो डेफिनेशन में मान लो वो लाइन जो लिखी है वो भूल गए, आपने डेफिनेशन खुद भी तो समझा है ना, तो वो अपने वर्ड से बता सकते हो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, राइट। इसके बाद एग्जिस्टेंस, क्यों वो चीज हुई, ठीक है, तो कोई तो ऐसी एक्चुअल नॉलेज होगी आपके पास, कुछ तो डाटा होगा जो आप देखते हो। जैसे टेलीविजन का वायलेंस तो बहुत आसान चीज है, हर एक टेलीविजन में हर एक मूवी में वायलेंस हो रहा है आजकल, ठीक है, चाहे वो बच्चों के लिए देखने के लिए हो, चाहे वो एडल्ट्स के लिए हो, हर जगह वायलेंस है वहां पर, ठीक है। समथिंग बैड हैपेंस देन द गुड थिंग हैपेंस ना, तो यहाँ पर वायलेंस तो हर जगह है। तो आप कोई भी पर्टिकुलर मूवी उठा लो, कोई भी पर्टिकुलर मूवी जो बच्चे देखते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एडवांटेज डिसएडवांटेज में क्या बताना है, आप क्यों उनको अपना आइडल मानते हो, आपको क्यों लगता है कि ये जो गलत है, वायलेंस दिखा रहे हैं, ये गलत है या सही है, ठीक है। लास्ट इज योर कंक्लूड कर दो। कुछ नहीं याद रहा तो कम से कम एक लाइन दो लाइन तो बोल ही सकते हो कंक्लूजन में, अपना ओपिनियन तो बोल ही सकते हो। तो एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम मिला के आपके पास 1 मिनट की स्पीच पूरी तैयार हो गई सिर्फ मैप आउट से, और इसमें आपने जो लिखा अच्छे से वो याद करोगे तो 2 मिनट 3 मिनट बोल लोगे, समझे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। वन मोर थिंग, बच्चे आवाज तो आपकी अटक रही थी, वो क्यों हो रहा है, नर्वसनेस की वजह से। वंस यू गेट यूज्ड टू इट तभी फ्लो आएगा। जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बिना आप प्रैक्टिस किए नहीं सीख सकते। आप कंटेंट यहाँ रिसर्च करके लिखना सीख सकते हो कि किस तरह इंट्रोडक्शन किया जा सकता है, किस तरह बॉडी पार्ट में कौन सा डाटा लगा सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। इलॉन मस्क भी नहीं सिखा सकता है आपको, ठीक है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन योरसेल्फ, उस पे आपको ध्यान देना है। किस चीज पे ध्यान दोगे, यहाँ पर नर्वसनेस जो हो रही है उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन सही करना है या वॉइस वेरिएशन करनी है, तो वॉइस वेरिएशन के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रीड करिए, बोल बोल कर, ठीक है। ट्राई टू रीड स्टोरीज विद लाउड वॉइस में। आप एक किनारे बैठ जाइए, कहीं घर पे अपने हैं चाहे हॉस्टल में है, रीड करने की कोशिश करिए। कैसे, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, मैनेजमेंट की कोई बुक तो आप पढ़ते होगे या कोई भी आपको मिलता होगा डाटा पढ़ने के लिए टीचर से, वो आप जोर जोर से रीड करो, ठीक है। ऐसे रीड करो जैसे आप खुद पढ़ा रहे हो, तब आपका वॉइस में वेरिएशन आने लगेगा, ठीक है। नर्वसनेस के लिए तो और कुछ नहीं है इलाज, इसी से फ्रेंड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कंटेंट आपका सबका सही था, कंटेंट मेरे ख्याल से किसी आई कांटेक्ट किसी का नहीं था, इसका तो थोड़ा बहुत था फिर भी, लेकिन उन दोनों का तो वो तो देख के पढ़ रही थी, आप लोग का तो नहीं था। तो आई कांटेक्ट आपको वर्क करना है, ठीक है। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इफ आई एम स्पीकिंग, इफ आई एम नॉट लुकिंग एट यू, ये चीज प्रॉब्लम होती है, आपने ऑनलाइन में तो बहुत देखा होगा, मैम का नहीं दिख रहा है वीडियो तो मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, इधर उधर देखने लगे, इधर उधर जाले तक देखने लगते हैं ये लोग, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको तभी होती है क्योंकि आई कांटेक्ट मेंटेन करने से आपके ब्रेन में ये नोटिस जा रहा है कि हम पे ध्यान दिया जा रहा है, तो आपका कंसंट्रेशन बना रहे। तो ऑडियंस को हमेशा ये डर बैठा के आपको रखना है कि उनको ध्यान देना है,
ठीक है, आपका कंसंट्रेशन इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट कम। Good afternoon, myself Sutan. 1 minute, 1 minute. Myself Simran, good afternoon. I am standing here to represent my speech and my feelings on the topic television, violence and children. So basically television, social media, all are having both the things, positive effect and negative effect. But here I am standing to tell you about the negative effects. See, television and other things which are related to the medias are having a great effect on us, like in fashion, eating, clothing, everything on our daily life. Whatever we see, we want to imitate that in our real life. So basically I'm telling you about that. As per my experience, when I was child, when I was very younger, I want to copy everything whatever I was watching on my television, like Ben 10, Doraemon, whatever I watch, I want them, like I want to imitate like them. Basically, like they used to kill the monsters, I also want whoever so scolds me, I want them to okay. So yeah, that was my experience. So there are thousands, I think, every episodes or every uh, shows having some negative effects, like CID, Crime Patrol. They are having a great effect on us because they maybe some will take in positive way, but the teenage age, which are whoever's are watching, they may get that negative because they saw the whole process that how the crime was done. So basically, anyone can get the idea from that. That yeah, I can also do like that even, and I will take the precautions also that I will not be get caught. So yeah, that was my opinion. That's all. Thank you. All right. Yes, your constructive feedback. Anybody else? Sabka positive feedback. Okay. First of all, content was very good. You have included your own story. You have included your own opinion. That was good. Eye contact, you had very good. ठीक है. Voice variation थी, but आपकी सांस थोड़ी सी चढ़ रही. The own, yes, I know. I know that is happening. तो वो आपका जो वेरिएशन है, see the thing is कि यहाँ पर वो अपने ब्रेन को भेज रही है मैसेज that ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है, and temporarily इनका ब्रेन they forget to breathe. They literally forget. This is actual realization. आपका जब इतना नर्वस हो रहा है, इतने सारे मैसेजेस जा रहे हैं ब्रेन में कि वो ब्रेन ब्रीथ करना ही भूल गया. ठीक है, तो इसी वजह से आपका नर्वसनेस जो क्रिएट करता है एक टेम्पररी एक आप कह सकते हैं माइल्ड लेवल ऑफ हार्ट अटैक रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, बिकॉज यू फॉरगॉट टू ब्रीथ. ठीक है, तो इसी वजह से सांस थोड़ी सी चढ़ रही है. नर्वसनेस के अलावा मेरे ख्याल से आपको कोई भी इशू नहीं. ठीक है, so you have to come up here and practice it so that you get friendly. ठीक है, 42 roll number. Okay. Yes, anybody else? बाकी तो इधर इतना ध्यान से सुन रहे हैं लेकिन लिख नहीं रहे हैं. बाकी का कब आएगा प्रेजेंटेशन यहाँ पर? You know you have to present the speech. Yes, Rohit, you can go ahead and present your speech. हाँ? नहीं नहीं, आप प्रेजेंट ऑलरेडी कर चुके हो, उसने अभी प्रेजेंट किया. नहीं. Yes, Ravi Shankar, do you want to present? Yes, ma'am. Okay, go ahead. Hey, no talking. लिखो अपना, जिसका हो गया, they can condemn. Good afternoon, all of you. As you all know that my name is Ravi Shankar Kumar, and I am here to deliver a speech on the topic television, violence, and children. Television can be
powerful influence in developing value system and shaping behavior. According to survey of American children watch an average of 4 hours of television. As a result, TV violence and children become hot topic. Children who watch many hour a week of violent TV may become inert to violence and begin to see world as scarcity and unsafe place. As a parent, you are your child first line of defense. It's your job to protect your child क्यों बातें हो रही है? from शांत हो जाओगे तो negative effects of excessive TV violence and protect them from the problem resulting from such exposure. Monitoring your child viewing habits as well as engaging in frank conversation about what they might have seen can help stave at any last emotional effect. Some suggestion from me that pay attention to what your child are watching. Watch TV with your kids and change the channel or turn the TV when violent or offensive materials comes on. Limit their TV times. That's all. Thank you. ऑलराइट रविशंकर, कंटेंट बहुत अच्छा था. आई कांटेक्ट आप थोड़ा बहुत मेंटेन कर पा रहे थे इवन दो यू आर इन ऑफलाइन मोड, सॉरी ऑनलाइन मोड. एंड थोड़ा सा आपको वॉइस के फ्लो पे ध्यान देना है. ठीक है, आपका वॉइस जो है उसका फ्लो थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था एंड दैट वाज नॉट आई थिंक बिकॉज ऑफ द नेटवर्क, बट आपका एक्चुअल में वॉइस थोड़ा थोड़ा ब्रेक हो रहा था. तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट पार्ट और बाकी सब सही था. ठीक है. Okay, ma'am. Yes, Rohit, you can go ahead and present your presentation. Hey. Yes. Good afternoon, everyone. Now I am present to television violence in children. Watching violence television can have many effects on all age groups. Violence on television is one of the most common media influences in children these days. There are reasons how television violence affect children, such as how much television they watch, their age and responsibility, and also whether they watch television alone or with adults. It also matters if their parents talk with them about the violence they see on TV. In order for parents to protect their children from harmful effects of violence on television, it is essential to know what the impact of television violence can be on children. Violence can play an important role in the development of children. It may cause some to it may cause some or to perceive it and not get affected. Some may be affected by it in a very dangerous way, like incident. Children may become less sensitive to the pain and suffering of others. That's all. Thank you. All right. So Rohit, again, content was good. Eye contact maintain हो रहा था आपका. थोड़ा सा आपको flow पे work करना है. So you have to continue reciting, presentation this, so that you can get a perfect flow. Yes. Okay, ma'am. तुम्हारा उधर डिस्कशन. अभी तक यहाँ से सिर्फ 4 स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया है ऑफलाइन. इन चारों का ही लगेगा अटेंडेंस इफ यू डोंट प्रेजेंट. कम. I am here to present a speech on television violence and children. Today, the world television, especially news channels, are promoting terrorist and extrajudicial content to get TRP and popularity of channels. This creates bad impact among children, especially teenagers, that is 13 to 19 years old. They are becoming more and more mentally disturbed and
anxiety problems, issues concerned to deterioration of personality and attitude. As a result, our government has started censorship to ensure sexual content will be shown to children above 18 years. As a youth and citizen of India, I strongly agree to the step that government has taken to stop children violence and television. All right. So what is your feedback on her speech? You can see that. So yes, first of all, आई कांटेक्ट तो नहीं होगा because आप देख भी कर रहे हैं, ठीक है. दूसरी चीज, वॉइस आपकी बहुत ही वीक, ठीक है. So you have to be more confident because weak voice represents weak, ठीक है. तो अगर आपकी वीक वॉइस वीक है तो कॉन्फिडेंस में एटलीस्ट सुनाई देना चाहिए, ठीक है. वो सुनाई नहीं दे रहा. हाँ, दैट इज ऑल राइट. वो करोगे ही, अदरवाइज इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह रहा है. No matter how much time I am giving you, you will not be well prepared unless and until you come. ठीक है. हाँ, that is all right. So I will give you 6. ठीक है. Your content was good, ठीक है. Your voice speed was good, ठीक है. आपका जो स्पीड है बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा स्लो नहीं है. स्लो ठीक था लेकिन वेरिएशन, ठीक है. बीच में ब्रेक नहीं हो रहा था लेकिन वेरिएशन ही नहीं, ठीक है. So I will give you a 6 and speed was good. और क्या बोलना? Yes. Sorry. क्या कहेगा? बच्चे रोल नंबर नाम 72 नाम रंगोली. हाँ, yes, online student. Anybody else who would like to give their speech? Yes, Priya, you can go ahead. Hello everyone, my name is Priya and I am going to give a speech on television and violence. Yes, no talking. These days, just about every time you turn on the TV, you are met with a barrage of violent images, including explosion, suicide bombings, and war casualties. And that's just the news. Many popular television shows, even those is the so-called family time slot is 7 to 8:30 p.m. also feature much more violence than shows aired in this time slot just a few years ago. American children watch an average of between 3 and 4 hours of television daily. As a result, TV violence in children has become a hot topic, and studies shows extensive reviewing of television violence may cause children to become more aggressive and anxious. Children who watch many hours of big violent TV become injured to violence and begin to see the world as a scary and unsafe place. And that's it. All right, Priya, content, you have not included your own content, ठीक है. आपने content में अपना कोई opinion नहीं छोड़ा है, ठीक है. It is important because it will break the connection with the audience. Audience के साथ आपका connection जो है वो टूट जाएगा. Second, eye contact नहीं था because you were reading from the notebook. थोड़ा बहुत आप एक एक लाइन के end में अगर देख लेते ऊपर उठकर, that would have been enough. And third thing, voice आपका लो अच्छा है लेकिन वेरिएशन नहीं है, ठीक है. उतार चढ़ाव नहीं है लेकिन ब्रेक भी नहीं हो रहा है आपका वॉइस, ठीक है. तो वो सही है. आप वेरिएशन पे थोड़ा काम करें एंड थोड़ा सा अपने कंटेंट पे भी काम करना है, ठीक है. ऑलराइट. यस, एनीबॉडी एल्स?
Let's start now. So, hello everyone. Hello everyone and good afternoon. My name is Arpreet Singh and today I from Akanksha ma'am give me this good opportunity to give a speech on television violence and children. So first of all, we know what is this? What is television violence and how it affects the children? Okay. So there, as we know that before smartphones, the television is the medium from which it affects the children, like cartoons. And from my when I was children, so I saw Power Rangers like that cartoons. So I think to be like them. So this was the situation, and nowadays it might be a huge topic because the television medium is being extending, like smartphones. We used to the teenagers and children used to play games like PUBG, which makes a huge violence and impact on them. And there must be advantages of this games and violence, that many of the teenagers remove their stress from playing by playing these games. And in my opinion, and my conclusion was that we have to stop controlling the use of these games and television. And thank you. Yes, yes. Yes. Can you give him a constructive feedback from your side? Sorry? Okay. Okay. Yes, ma'am. Anybody else? Yes, ma'am. Can I? Wait for a minute, Manish. Let me give him a review, then you can start, okay? Yes, anybody else? सही से नहीं लिखा है कि सही से लिखना है? Conclusion नहीं था. Yes. जितने भी स्पीच अभी मैंने खुद से दिए, और मैम जो लिखा है मैंने अपने कॉपी में, इससे कुछ नहीं, तो मैंने कुछ याद नहीं किया था, जो मेरे दिमाग में आया, अगर मैं इसको थोड़ा लर्न कर सकते तो. All right. Let's do one thing, Harpreet. Yes, ma'am. मैं ये मार्क करके रखती हूँ और नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करके यहाँ देखिए एंड आप मुझे खुद बताएंगे कि लास्ट टाइम से अभी नेक्स्ट टाइम जो देंगे उसमें क्या डिफरेंस आपने देखा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटेंट खराब नहीं था, कंटेंट उन्होंने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया. यस, ही वाज नॉट एबल टू प्रेजेंट दैट. कंटेंट वाज गुड, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका यहाँ पर आई कांटेक्ट भी था. ठीक है. द ओनली थिंग इज योर कॉन्फिडेंस इज वेरी लो. आपकी ना वॉइस में कॉन्फिडेंस दिख रहा था, ना ही आपके बॉडी पोस्चर. ठीक है. उस चीज के लिए हाँ, वो चीज तभी आएगी जब आप पूरी तरह प्रिपेयर होते हो. राइट. एग्जाम में कैसे होता है, सब क्वेश्चन आते हैं करके वो कॉन्फिडेंट वाला बच्चा कौन होता है? जो पढ़ के आता है. जो नहीं पढ़ के आता है वो कभी बोलेगा कि मैं सारा क्वेश्चन आंसर कर दूंगा? नहीं बोलेगा, बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं. स्पीच जो होता है, डिबेट होता है, प्रेजेंटेशन होता है, ये सारी चीजें के लिए आपको प्रेजेंटेशन के लिए टाइम क्यों दिया जाता है? सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल एंड देन यू कैन प्रेजेंट. ठीक है. ऑलराइट. तो आपको वॉइस पे काम करना है एंड थोड़ा सा अपना वॉइस ऊंचा करना है, ताकि आपकी ऊंचा इन द सेंस चिल्लाना नहीं है, लेकिन वॉइस में हाँ कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए. ठीक है. फिर 90. Yes. Anybody else? Yes, Manish, you can go ahead and speak. Yes, ma'am. Good afternoon. Yes, ma'am. Can I present? Yes, yes, you can start. Okay.
Good afternoon to you all. I am Manish Kumar. I am standing in front of you to express my view on the topics the same the violence affect or not. Most of the country like in India, most of they are affected by violence of television. Like we have, due to my opinion, most of the people, most of the children are watches TV and they also aggressiveness like movie or serials or any other crickets. So we can say that most of the children affected by without taking care of her most. And regarding from that, due to my aspect, this creates bad impact on children. But they, due to my think, people who are standing in front of whom they don't take care of children. And also I have also spent this most of the time in children life. I always watches most of the time in TV serials and like also play PUBG on social media. And apart from that, if we watch most of the social media, they also impressive and aggressiveness. And like watch through news and social media, they also try to convince me to fulfill our need like in a study. And also due to my conclusion, we are also responsible for that. And at last, due to my opinion, we should take care of in our family children's. And that's all. Thank you, ma'am. All right. बच्चे कंटेंट में थोड़ा सा एरर था आपका, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, वो आपको लिख के यहाँ पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। कोशिश करिए कि जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसको पहले एक बार लिख लो, करेक्शन हो जाए, उसके बाद आप प्रेजेंट करें, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप कोशिश करिए कि कैमरा में देख के बोलो। जब ऑनलाइन हो तो कैमरा में देख के बोलना है, या एटलीस्ट मोबाइल को देख के या लैपटॉप को देख के, जिससे भी लॉगिन हो वो डिवाइस को देख के बोलना है। एंड थर्ड थिंग, आपका थोड़ा सा फ्लो बिगड़ रहा है, बस और कोई नहीं। ये 3 चीजें हैं जिस पे आपको वर्क करनी है। थोड़ा सा कंटेंट पे वर्क करिए, थोड़ा सा आई कांटेक्ट पे, एंड थोड़ा सा फ्लो पे वर्क करना है, ठीक है। थोड़ा अटक अटक के जो आप बोल रहे हैं उस पे वर्क करना है। Ma'am, can I improve from the previous presentation? Yes, you did. लास्ट प्रेजेंटेशन से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। लास्ट प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा अटक रहा था, प्लस देयर वाज सम नेटवर्क इश्यूज आल्सो देयर, लेकिन इस बार नेटवर्क इशू भी नहीं हुई और वॉइस थोड़ा सा कम अटक रहा है अब, लेकिन अभी भी थोड़ा सा उस पे वर्क करना है आपको, ठीक है। ऑलराइट, 10 स्टूडेंट्स एंड आपके पास 5 मिनट है। ऑनलाइन 17। यस, yes. Let her, then after that. Good afternoon, everyone. My name is Vanshika Bharti, and today's topic is television violence and children. Television can be powerful influence in developing value systems and sharp behaviors. Unfortunately, much of the today's television program in violence. Hundreds of studies of the effects of TV violence on children being to accept violence as a way to solve
programs. Viewing of television violence by children cause greater aggravations. My point of view is parents can protect children from TV violence in a following ways. Pay attention to the programs their children are watching and watch some with them. Set limits of the amount of time they spend with television. Removing the set from the children's bedroom. Yes. You can go ahead and give her the कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो आप इनको देना चाहते हैं what should how was her speech and what should she do to improve okay everyone all right वॉइस तो आपका बहुत ही कमजोर था आई हैड टू स्ट्रेन माय इयर्स टू वॉइस आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रखना है ठीक है नो मैटर हाउ लो योर वॉइस इज लेकिन थोड़ा सा वर्क करना चाहिए सुनाई देने में लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं उस चीज को लेकर जो आप बात कर रहे हैं ठीक है सेकेंड थिंग कंटेंट वाज गुड लेकिन आप यहाँ पर अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे आई वाजंट एबल टू गेट द पॉइंट्स दैट यू वर डिस्कसिंग तो यहाँ पर आपको अटक अटक के जो बोल रहे थे वो नर्वसनेस की वजह से हो रही थी या वॉइस वैसी है नॉर्मली वैसी हो नॉर्मल रहता है नर्वस तो नर्वसनेस के लिए यू हैव टू कम अप हियर एंड कंटिन्यूअसली प्रेजेंट करना ठीक है ऑलराइट सिट डाउन नाम बताइए बच्चों रोल नंबर 8 yes last class you were present na आप दोनों last class present हैं do one thing sign this both last class and this class last section हाँ नहीं आया मेरे पास कांटेक्ट ऑनलाइन हाँ ऑनलाइन जो दो लिंक है दो खाली कॉलम में से एक करके साइन कर देना स्टार्ट हेलो एवरीवन वॉइस ज्यादा जाएगी बातें कम Hello everyone, I am Yashanti and today's topic of speech is television violence and children. These days, just about every time you turn on the television, you are met with a barrage of violence images including explosions, suicide bombing and the war casualties. And that's just the news. Many popular television shows, even those in the so-called family time slot of 7 to 8 p.m. also features much more violence than shows aired in this time slot just a few years ago. Studies shows extensive view of television violence may cause children to become more aggressive. Children who watch many hours or week of violence TV may become inured to violence and begin to see the world as a scary and unsafe place. In my opinion, to reduce television violence, instead of watching cartoon or animated films, they have to play game, explore outdoor things. Thank you. Yes, ma'am. what feedback would you like to give her sorry क्या बोल रहे हो बच्चे सही से बोलो
Sorry. Acha, she was reading well. Simran, that's hostile comment. Yes, the thing is कि there was no voice variation. That's why it might seem that you are going fast, but you were not. ठीक है, आपका speed ठीक है, voice में variation चाहिए, थोड़ा सा confidence चाहिए, facial expression चाहिए, content was good, but लेकिन जहाँ से छापा था वहाँ से नहीं छापा, ठीक है? 56. Name? हाँ? ये Shansi. How do you spell it? YAASHANSHI. Yes, anybody else? Let's do one thing. बच्चे आपने present कर चुका है already? सुनो, आपने already present कर? नहीं, आपने present कर चुका है ना? This is your third one. Sit down. Okay. Roll number 46. आपका यहाँ roll number मुझे नहीं दिख रहा. 46 कौन है? 46 रह गया. 46 है? Present है? नहीं, तो यहाँ पर 46 offline है? Online है? 46. प्रेजेंट किया था। लॉग आउट हो गया. अच्छा ठीक है, चलो. ये ऑनलाइन है. प्रिया ऑनलाइन. अनीश ऑनलाइन है. यस, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप लोग अगर मुझे कंटेंट नहीं दिखाते हो बिफोर गोइंग होम, ठीक है, तो आपका नहीं लगेगा अटेंडेंस. दिखाइए, कंटेंट लिख लिया तो. Online students also send me the content as soon as possible.